Good evening, ladies and gentlemen. Let's remind you the power of our nation's name. The Bha in the Bharat comes from bhav, or feeling. We are a civilization which has upheld the principle of Lord Ram's Raj Dharma and have vouched to protect those who cannot protect themselves. Today, Bharat has pledged to give a citizenship shield to those Hindus, Sikhs, Christians, Jains, Buddhists and Parsis persecuted in Pakistan, Afghanistan and Bangladesh, our neighboring countries, who came to India till 31st of December 2014. But why does the Modi Sarkar feel the need to protect them? Let's remind you, 1,000 Hindu and Christian girls are abducted every single year in Pakistan. 20 girls abducted are converted every month in our neighboring state. 5,000 Hindus are migrating to India every year just to flee the persecution. 95% of the temples in Pakistan have been converted into mosques and commercial buildings. Only 13 out of the 438 temples in Pakistan are operational at last count. Today, these people have been given a ray of hope by the Modi Sarkar, with the CAA rules being notified by the Home Ministry. Watch how the Matuas in Bengal brought out the drums and celebrated what they call the Second Independence Day. Remember, there are over 3 crore Matuas in Bengal, many of whom fled Bangladesh and have been living in India since 1971 as refugees. Till date, they have been waiting to be embraced by India. In fact, Home Minister Amit Shah has put out CAA Gazette saying Prime Minister Modi has delivered on another commitment and has realized the promise of makers of our constitution. Of course, the Union Home Minister had announced right here on our platform to me during an interview that CAA will be notified before the 2024 poll dates are announced. Listen in to his assurances on the 9th of February and on 24th of November on the Times Now Summit. Listen in. अमित शाह जी, आपके अनफिनिश्ड एजेंडा पर वापस लौटती हूँ क्योंकि कुछ ऐसे प्रॉमिसेस किए थे जिसमें एनआरसी और सीएए था. क्या अब ये ठंडे बस्ते में? कुछ ठंडे बस्ते में ही है. सीएए देश का कानून है. अब इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता. हमें रूल्स बनाने हैं. कोविड के अप्स डाउन के कारण इसको रखा था. कोविड अब समाप्त होने को आया है. मैं आज इतना जरूर कह सकता हूं कि सीएए का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा ऐसा स्वप्न देखने वाले भूल कर रहे हैं. सीएए वास्तविकता है और इस देश का कानून है. सीएए नोटिफिकेशन, सीएए देश का कानून है. इसका नोटिफिकेशन निश्चित रूप से हो जाएगा और चुनाव से पहले के बाद पहले ही होगा. चुनाव के पहले ही सीएए को अमल में आना है. इसमें किसी को कंफ्यूजन रखना नहीं है. ये भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं का वादा है. जब देश का विभाजन किया और वहां पर ढेर सारे वहां की देश में अल्पसंख्यक जो थे, हिंदू, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन थे, उन पर प्रताड़ना होती थी. सारे लोग यहां भाग कर आना चाहते थे. उस वक्त कांग्रेस पार्टी का वादा था कि आप धीरे धीरे आइए, आप जब भी आओगे भारत में आपका स्वागत है, आपको नागरिकता दी जाएगी. फिर मुकर गए. और मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं, सीएए किसी की भी नागरिकता लेने का कानून नहीं है, छीनने का कानून नहीं है. इस देश की माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है. देश में किसी की भी नागरिकता सीएए छीन ही नहीं सकता क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है. सीएए जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण, उनको नागरिकता देने का कानून है और मैं मानता हूं इसमें किसी का विरोध नहीं होना. You heard it. 2022, 2024, it has been the same stand. Immediately after the
notification of the rules today, but once again the opposition dug in their heels, while Congress party's Jairam Ramesh posted that this is headline management after Supreme Court's wrap on the electoral bonds. AIMIM chief fear-mongered that Muslims will be reduced to second-class citizens. Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav slammed the bhatkave ki rajniti, and Chief Minister of Delhi Kejriwal said that BJP is diverting from the real issues, while Chief Minister Mamata Banerjee has declared that she will not allow it in her state. Listen in. এনআরসি ক্যাপে নিয়ে ঝুলিয়ে পকেটে একটা কাক মেরে অন্য কাককে ভয় দেখানো, এটা আমরা করতে দেবো। এটা বাংলার সংস্কৃতি সবার জন্য। क्रोनोलॉजी समझिए, आप टाइमिंग देखिए, चुनाव घोषित होने वाले हैं, 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसके पहले सरकार को अचानक से सोचता है कि हम ये लेकर आए। 5 साल से क्या कर रही थी सरकार, क्यों नहीं ला? इसलिए हम बोलते हैं ना कि सरकार पोलराइज करने की कोशिश कर रही है चुनाव के पहले। With regard to this CAA notification, I wish to make it clear that we will oppose it. We have challenged the validity of the act, and that court case is pending before the Supreme Court. Supreme Court has already sent communication to state government also in this regard. But why are Mamata Banerjee and India alliance partners opposing CAA ahead of the polls? Let's bring you a fact check from India's border states. In the 60 years between 1951 to 2011, the Muslim population in Assam has grown from 24.8% to 34.2%. Chief Minister of Assam, Himanta Biswa Sarma, ardently advocated for the NRC and the CAA in the other border state of West Bengal. In the same time frame, the Muslim population has jumped from 19.4% to 27%. Now, if you juxtapose the way the minorities have voted in the last Lok Sabha polls, an interesting pattern emerges. Only 8% of the Muslims voted for the BJP, but 30% across India voted for the Congress. In Bengal, 70% of the Muslims voted for Mamata Banerjee. RJD got 77% of the minority votes. In Bihar, even DMK, BSP, Samajwadi Party and JMM clearly rely on this vote bank to shore up their numbers. In fact, in 2005, Mamata Banerjee herself was alarmed by the issue of illegal immigrants. These visuals show the moment when she had raised the issue in Lok Sabha, saying that illegal immigrants from Bangladesh had spelled disaster for West Bengal by finding their way into our voters list. On that day itself, Mamata Banerjee resigned from Lok Sabha over this issue. This was the issue on which she resigned from the Lok Sabha. She can be seen flinging the papers at the speaker over the issue of illegal immigrants, and you just need to watch this. जब इस स्वरूप इलाज जब इस स्वरूप इलाज While if that was Mamata Banerjee, the Congress today rejects the CAA. Let me remind you how Manmohan Singh in 2003 had advocated for the persecuted. He had said after partition, minorities in Bangladesh faced persecution. It is our moral obligation to grant citizenship to persecuted minorities. Our approach towards granting citizenship should be liberal. But today, Congress has clearly changed its stance. Does it worry that Modi's party may just realize their 400 par dream with this latest pitch of Sabka Saath? And is that the real worry that the opposition has? That, ladies and gentlemen, leads me to the legitimate question we're asking on the Newshour tonight. Why fan fear and fury just for polls? That's the question, and that's the debate coming up on the other side. You're watching the News Hour first. Debate number 1 on Times Now, Super Prime Time.
Joining the debate tonight is National Spokesperson of the BJP, Nalin Kohli, Harshvardhan Tripathi, Senior Journalist, Dr. Anand Ranganathan, Author, scientist, political commentator. Also joining me this evening, Tausif Ahmed Khan, lawyer and political analyst, supports the Trinamool Congress. Anurag Bhadoria, national spokesperson of the Samajwadi Party. Syed Asad Abbas, also joining the debate, political analyst. But my first question goes to Dr. Sanjay Jha, suspended Congress leader, my friend, political commentator, author, what have you. And Sanjay Jha, what's the problem? Once again, only problem, only criticism is headline management. Well, there was no headline management when the act was passed. You were in opposition even then. Today, you call it headline management, you call it eve of the polls. Nothing's changed for you, so nothing's changed for Prime Minister Modi and Home Minister Amit Shah, who've been committed. They've been consistently saying that this will not be reversed and it will come. So why is the problem? What's the hue and cry all about? Navika, we have raised this question in the past. How many times has an act been cleared in Parliament and it's taken 4 years to get notified? And obviously it's been notified just as we are talking about the general election dates being announced. And look at the stunning coincidence. I mean, this is the BJP playing a standard political playbook on a day when the BJP has been humiliated and exposed before the public of India on the electoral bonds issue, probably the most damning indictment of this government, which brought about an unconstitutional law, has amassed money in thousands of crores. Almost 60% of the money has gone to them. Biologically, all the elections since 2018 are tainted because they have been used potentially with black money. And the day the Supreme Court gives a verdict where the BJP was trying to prop up SBI to be its conduit to try and stall and delay the disclosure of the names of the corporate investors in the electoral bonds, they notified the CAA. I mean, the timing is like a stunning declaration of the hypocrisy of this party, and more important, insecurity. It is such an insecure party because it is feeling rattled. The whole world is talking about the electoral bond scam, as it is being called. Hopefully it will be exposed when the names are out in a couple of days. So let me tell the BJP, the headline is going to change again, no matter how hard you try. The second point, I heard Mr. Shah speaking to you in the clip that you showed. Mr. Shah should also remember that he called a lot of the immigrants coming from neighboring Bangladesh as termites. That's not the language you use against refugees anywhere in the world. And I think Mr. Shah failed to clarify as to who did he mean when he called them as termites. And that, by the way, was criticized not just in India but globally, because that is not the language you use against people who are homeless and desperate for their own survival. Point number three, we have debated the CA for several months on end during the 2019 period, 2020 period. Here is the truth, Navika. You're right that the Congress government favored a policy of giving refugees habitat in our country. But no one in that government talked about discrimination based on the religion. So to make an assumption that only people from certain communities, but not the Muslims, could be the disaffected elements from Afghanistan, Pakistan, or for that matter, Bangladesh, was again a blatant play being done to polarize India. And we have to juxtapose, Navika, the CAA I think either you've been born only after this law has been passed, or you haven't read anything of the past. Even during the Congress's time, even during the Constitution being prepared, the statement was that the minority communities in the neighboring countries, minority communities are Muslims, the minority community in Afghanistan, Pakistan and Bangladesh. Either you are naive or pretending to be naive or being totally hypocritical, Sanjay Jha. Which of the above? I'll tell you just one example. Are the people from Balochistan in Pakistan not actually victims of some extremely horrific persecution? Are they not? Can I ask Nalin? He's a very one of the most decent
moderate people in the So BJP. we are not worried about, so what you are saying is we are not worried about the Hindus, we are not worried about the Sikhs, we are not worried about the Jains, not the Parsis, not the Buddhists, but we are worried only about the Baluchistan minorities in Pakistan. Nalin Kohli, please respond to this very weird argument from Dr. Sanjay Jha. And Nalin, just give me 15 seconds. Now Nalin Kohli, now every edition will come in later. Sanjay Jha, please bear with me. Nalin Kohli is responding. I'm saying NRC must be juxtaposed to that question. That's so all. Navika ji, first for the viewers, it's important that they know the facts. When there's division of India and partition, the Muslims in India wanted a separate country, which led to the creation of East Pakistan, which is basically Pakistan, today's Bangladesh. And some Muslims decided to stay back. No problem here. The commitment of Pakistan at the birth of that nation was that we will take care of our minorities, which we all know they haven't. Whether it is Christians, whether it is Hindus, whether it is Sikhs or Buddhists. They have diminished and they are persecuted on a daily basis. In Bangladesh, that number has come down to, we have visuals regularly. But let's leave the negative aside. India is the only land they would come to. It's an unfinished agenda of partition. So if they have suffered, the Congress party owes a nation to every one of them and their generations thereafter. That why did they leave them in the lurch? Despite talking about bringing them back through the decades, right up to Prime Minister Manmohan Singh. Second, these countries were created on a Muslim identity. They decided to be that. How can an argument today be taken, which is a very rich argument to say so, and amazing for the Sanjay Jha to actually say that Muslims persecuted in Muslim countries should now come to India? Then the Boko Haram persecutes Muslims in Nigeria. The ISIS did it across the Middle East. The Taliban did it across several Muslim countries. And that is the next point. There are several Muslim countries, over 50, where a Muslim persecuted in another country, Muslim country in that case, can choose to go, and they do go. But where would a Sikh go? Where would a Hindu go? India is not even a Hindu country by definition. We are a Hindu majority country with a Sikh population protected as a minority, as a Buddhist population protected as a minority. So or Christian population protected as a minority. So they have an option to come here as an unfinished agenda of partition. Today, for any party, which is the Congress or anyone else, to say that these people should continue to be persecuted, should continue to be raped, murdered, killed because they are from the Hindu, Christian or Buddhist or any other community as a minority in these countries is not just heartless. It is such a ruthless argument at the cost of a human life for the sake of misguiding Muslims of India, because CAA does not change the identity of any Indian citizen, which includes every Muslim brother and sister of ours who is a citizen of India. So an argument on falsehood, patent falsehood, lies and convenience is something to be rejected. Now to the Congress party. The Congress party has no head, no headline, no management. They are a rejected party by their own allies. In West Bengal today they've been shown the door. As clearly you are worth 3 seats, 2 seats, 1 seat, now 0 seat. The CPI has thrown them out also and said we don't believe that Rahul Gandhi should contest from Wayanad. Absolutely. He was happy in Amethi, that was your family place, go there. Smriti Irani ji has made you lose the election, face another election, that's your family seat. So the Congress party needs to manufacture a controversy. Because and this is it. And this is it. And may I put this out, that what did Nehru Liaquat Pact actually say? It said the governments of India and Pakistan solemnly agree that each shall ensure to the minorities throughout its territory complete equality of citizenship, irrespective of religion, a full sense of security in respect of life, culture, property and personal honor, occupation, speech, worship. Minorities in these countries. And in Pakistan,
Hindus can be a minority, Sikhs can be a minority, Parsis can be a minority, Buddhists and Jains can be a minority, but can Muslims be minorities in Pakistan? Anand Ranganathan, can you please explain this to Dr. Sanjay Jha, usually a reasonable man, but today opposing for the sake of opposition? Good evening, Navika, and good evening to my fellow panelists. Heartiest congratulations to every Indian and every persecuted Hindu or Christian or Buddhist or belonging to the Indic faith around the world. Today is a great day. It's a historic day, and I congratulate this government for notifying the CAA. And for those already protesting in Pakistan and Bangladesh, it's strange that Pakistan, Bangladesh, and Afghanistan do not have a CAA equivalent. Don't they care for persecuted Muslims in India, like India cares for persecuted minorities in these countries? Look, we will either have a divided India or a destroyed India, had screamed Jinnah. He managed the former. Those who oppose the CAA are intent upon managing the latter because CAA is morally just. Let me give you a few reasons. Navika, I want to ask rhetorically because I will be providing the answer itself. What did Congress mean when it talked about the minorities in Bangladesh? Did it mean the Muslims? Obviously not. It meant the non-Muslims of Bangladesh. Why then, in 2012 and 2015, did the CPIM and Congress through resolutions demand citizenship, Indian citizenship for persecuted minorities of Bangladesh? Were they talking about Muslims? Secondly, these border countries are Islamic republics and therefore Muslims are not the minority. CAA is about India granting citizenship to those who are persecuted because they are not followers of the majority religion of Pakistan, Bangladesh and Afghanistan. And it is a fact, which Mr. Kohli has explained so beautifully, that India was divided on the basis of religion. Muslims could choose a home and 75 million did. Good luck to them. They chose Pakistan, a nation created for Muslims. But India wasn't created for Hindus. Post-partition, in 1951, Muslim population share in India was 9%. Today it is 16%. Some say might even be 20%. And what of the Hindus in West Pakistan? They were 16% in 1948, then 1.6% in 1951, and today they are just 1.5%. And Hindus in East Pakistan, now Bangladesh, they were 23% in 1951, 15% in 1974, and today they are measly 7 to 8%. So in India, minority population share has grown, while minority population share in Pakistan and Bangladesh has decreased, dwindles with millions persecuted, converted, killed. Where would the Indic people go? Secondly, my only disagreement with the bill or the act is that atheists, apostates and heretics who are also condemned in Islam should also have been included. But anyway, remember, this is about granting citizenship, not asylum. India already grants asylum to lakhs of Muslims, including Rohingyas and the Afghans. And finally, those calling this act Islamophobic, aren't you ignoring the fact that 500,000 ethno-religiously cleansed Sri Lankan Tamil Hindus currently settled in India are also excluded? I can say, why are you excluding Hindus from Sri Lanka? So it is not to do with Islamophobia at all. And finally, let me be very clear. Another point is that this time round, I hope Mr. Nalin Kohli gives an assurance to the country. We will not buckle down to Islamists and anarchists like we did the last time round. Enough is enough. I'm coming to you, Anurag ji. I have 2 points. I'm glad Anand has agreed with me that the BJP needs to tell the people of India why are the Tamilians excluded, especially those who have suffered in Sri Lanka. This is something that Nalin must respond to, number one. Number two, very important, that when you are talking about refugees, when you're talking about people who are displaced on account of any state or religious persecution, it is a humanitarian issue and it is not based on religion. To give you an example, we are today saying that every religion is allowed excepting a Muslim simply because Afghanistan and Bangladesh and Pakistan are Islamic countries or Muslim dominant countries. What about the Pashtuns in Afghanistan? What about the Hazaras in Afghanistan? By the way, let me tell you, Anand. भैया नेहरू जी को क्यों नहीं बताया ये सब? नेहरू जी को क्यों नहीं बताया ये सब? Nehru ji did not include all of these, and even at that time in the Liaquat Pact time, it was clearly said it was for the minorities in these countries.
that they should be protected, and if they are not, they will get not asylum, but they would be protected by the countries that were divided at that time. But Nalin Kohli, everybody, first Sanjay Jha called it virtually Islamophobic without using the term Islamophobic. He said that Muslims were being kept out, but then once Anand Ranganathan reminded him, he suddenly remembered the Tamil Hindus. ये भी एक पोस्ट स्क्रिप्ट की तरह, you know, all of this is PS. इनको सब कुछ बाद में याद आता है. Why Nalin Kohli? Only because, oh, I found this in the research, now I will use this for my controversy ahead of elections. Is that really the manner in which they are proceeding? Navika, I mentioned the Sri Lankan issue before Anand did. So first, thank you, Anandji, for those kind words. Let me come first to the argument on the Tamilians from or Tamil origin people who have come from Sri Lanka. The main point of CAA, it deals with the partition. I said this is the unfinished task of partition, which means undivided India, where Indian citizens across the length and breadth of India could stay here, and therefore they had a choice to come to India. They didn't on an assurance by Pakistan that they would be protected. Sri Lanka was not part of the partition story. Unless, of course, the Congress party wishes to explore it back to Lord Ram's day, given the fact that they themselves on an affidavit have denied the very existence of Lord Ram. I'm not sure if they would like to go to the concept of Ram Rajya that far back to the Ramayana. But on a serious note, this is a partition-related point. Second, why does the Congress party and other political parties... Sanjay ji, I've shown you enough respect and you've shown respect. I've never interrupted you. I've heard you. But let me finish my point. This heckling is not something which is inherent to your character. Let's not take the debate Afghanistan point. Was Afghanistan He's raised the Afghanistan question. Was Afghanistan part of the partition problem? Please address that as well, Nalin Kohli. Well, yes, I can address that too also. Pakistan, if you go back to the times of Maharaja Ranjit Singh, yes, to a large extent, yes. Kesariya's, I think the last page, I mean, Akshay Kumar's picture, I remember, which on Sarkar Fort. So perhaps a little bit of history lessons would help you understand that. Second, Afghanistan had a rich culture, a rich Indic culture. The Bamiyan Buddha statues were destroyed by the Taliban. The Sikh community, which had an important center in Afghanistan, has persecuted and come down to hundreds, from thousands, perhaps lakhs. So there is a continuity of that story from India, from Maharaja Ranjit Singh's time, and even earlier and beyond, right up to the belt through Nankana Sahib, through right up to Afghanistan. So I think one has to look at it in reality. Second, I wish to come to the Congress party, one comment. The Congress party does not have a script, and they don't have a leader. They don't have a leader because Rahul ji is constantly relaunched by the Congress party. But he's not giving them the political outcome of an electoral victory. He's having a problem for his own electoral victory. So therefore, what does the Congress party do? It has to have an agenda to attack the Modi government. So either that agenda to attack is a personal attack on Prime Minister Modi or the schemes of the government. On the schemes of the government, they have again no attack point. They are unable to show that Muslims are persecuted in India because they like to paint the BJP as anti-Muslim. The problem with the Congress party is they don't have a script even on that. Because Muslims, Hindus, Christians, Buddhists, Parsis, Jews, and Indian citizen is equally getting their rights under the constitution, and Prime Minister Modi's government is serving them equally. There is no differentiation on religion in terms of government schemes, government programs, government benefits, etc. So therefore, they have to latch onto something to create a narrative to go there and tell a Muslim vote bank that, look, this is what the BJP is doing very badly for you. The problem with that is that Muslims also within India are seeing through it. That is why the Congress party is not getting votes. So the Congress party has to understand somewhere or the other, they will have to have a script based on honesty. It can't be based on duplicity. Well, fair point. Anurag Bhadoria ji, 2019 में अगर CAA आ रहा था तब भी दिक्कत थी. अब 2024 में आ रहा है तब भी दिक्कत है टाइमिंग के साथ. कौन सा समय ठीक है और नक्षत्र क्या कह रहे हैं बता दीजिए देश को. नाविका जी आपने आनंद जी को टाइम दिया, नलिन जी को टाइम दिया. नलिन जी ने जो पहली बार बोला था वही दूसरी बार रिपीट किया.
आनंद जी ने जो बोला था, नलिन जी ने फिर दूसरी बार वही रिपीट किया। मैंने तीन बार इन लोगों ने मिलके बोला 20 मिनट, बात वही कही। मैं बोल रहा हूं टाइमिंग की है। टाइमिंग क्या है? आज जब देश के अंदर में डिबेट होनी थी इलेक्टोरल बॉन्ड पे, वो सबसे बड़ा मुद्दा था। कैसे किस पार्टी को कितना फंड मिला, किसने कितना किसको दिया, ये जनता को जानने की जरूरत थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई बैंक को फटकार लगाई और बोला कि आप उसको लेके आइए, बहानेबाजी मत कीजिए। इस सरकार की जिम्मेदारी थी। क्या सरकार की मंशा सही नहीं है कि जनता को पता चले किस पार्टी ने किसको कितना पैसा दिया और किसने दिया है, ये पता चलने का। दूसरा था कि किस तरह से यहां पे चुनाव आयुक्त कैसे अपना रिजाइन करके चले जा रहे हैं, उनके पीछे कारण क्या है। क्यों यहां पे जुडिशियल जजेस रिजाइन करते हैं, उसके बाद बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। ये देश के लिए सबसे बड़ी बात है। एक जुडिशियल में मैं तो कहता हूं सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। देश में कानून बदलना चाहिए। कोई जज अगर रिजाइन करता है तो कम से कम 15 साल तक वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता। किसी पार्टी की तरह किसी पार्टी के बिहाफ पे काम करके कितने निर्दोषों को जेल सजा दे सकता है। ये परंपरा ठीक नहीं है। चर्चा इस पे होनी चाहिए थी। आप आज सीए लेके आए इसलिए चूंकि आप जनता का ध्यान डाइवर्ट करना चाहते थे। आप चाहते नहीं थे कि देश के इन मुद्दों पे बात हो पाए, इन मुद्दों पे चर्चा हो पाए। अरे देश के अंदर में लाखों लोग इस देश की नागरिकता छोड़ के दूसरे देशों में चले गए। इसी देश से कितने लोग दूसरे देशों में रोजगार खोज रहे हैं, रोजगार में गए हैं। वो आप देखिए जहां वॉर कंट्री है उसमें रोजगार लेने गए। हम अपने लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, अपने घर वालों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, और बाहर से बुला के हम उनको रोजगार कैसे देंगे बताइए। हम अपने लोगों को घर नहीं दे पा रहे हैं और फिर हम कह रहे हैं आइए दूसरे हम सबको घर देंगे। इसके मतलब आप सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं। आपको और कोई लेना देना नहीं है। आपके पास न इतना संसाधन है। नहीं, पर ये तो कवायद बीजेपी की फेल हो जाएगी ना, क्योंकि आप सीएए को चुनावी मुद्दा बनाना ही नहीं चाहते, तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं। और कम से कम एक बात तो अनुराग भदौरिया जी, एक बात के लिए तो आज आप सेलिब्रेट कर लीजिए कि इस देश के इंस्टीट्यूशंस, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन, इस देश की डेमोक्रेसी महफूज है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के खिलाफ ऑर्डर दे दिया है, वर्डिक्ट दे दिया है। तो अब तो आप कम से कम ये नहीं कहेंगे कि इस देश के सारे इंस्टीट्यूशंस, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन सब खत्म हो गया है। क्यों हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सही है कि नहीं? देखिए, नहीं नविका जी, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। सवाल पूछा, जवाब नहीं लेंगे जब। अच्छा चलिए एक सेकंड हर्षवर्धन जी, जवाब दिए बिना अगर आपके पास आऊंगी तो ये इमरजेंसी डिक्लेयर कर देंगे। तो चलिए जवाब दे दीजिए अनुराग जी। मुझे इस बात की देखिए मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले क्या किया, देखा जनता उसके साथ नहीं है तो उन्होंने प्रभु राम को राजनीतिकरण में लेके आए, लेकिन जनता ने नकार दिया। उसके बाद देखा जनता उनके साथ नहीं है तो उन्होंने क्या किया, पार्टियां तोड़ी, नेता तोड़े, फिर भी जनता उनके साथ नहीं आई। उसके बाद परेशान होकर उन्होंने सीबीईडीआई का दुरुपयोग किया, फिर भी जनता उनके साथ नहीं आई। अब उन्हें लग रहा है पूरी क्यों किसान भी उनके विरोध में है, युवा भी उनके विरोध में है, छात्र भी उनके विरोध में, महिला भी उनके विरोध में, बेरोजगार उनके विरोध में जो आत्महत्या कर रहा है। फिर उन्होंने सोचा अब सीए लेके आए, किसी तरह से जनता का ध्यान डाइवर्ट करें, लेकिन जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हराने का मन बना लिया है। बीजेपी कितने भी हथकंडे अपना ले। लास्ट सवाल है नाविका जी, बड़ा सवाल है ये, मेरे सवाल का कोई भी जज, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप खुश हैं कि नहीं कि इस देश में लोकतंत्र और संविधान दोनों सुरक्षित हैं? पहले इसका जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस से कहूंगा, ऐसे इस तरह का कानून, गंभीर कानून बनना चाहिए कि कोई जज रिजाइन करके किसी पार्टी को ज्वाइन ना करे। कमाल है, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट अभी भी एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर सही काम कर रहा है और देश में लोकतंत्र और संविधान दोनों महफूज हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ये बात नहीं कहेंगे, बाकी दुनिया की सारी बातें अनुराग भदौरिया जी ने कह दी। और इसके हिसाब से तो ये चुनाव जीत चुके हैं, क्योंकि बीजेपी का तो कोई भी जो पैंतरा है वो चल नहीं रहा, फिर भी इतने चिंतित है। देखिए नविका जी, सचमुच मेरे लिए आश्चर्य की बात है कि नेताओं को यह भी नहीं पता कि कानून बनाने का काम संसद का है, सर्वोच्च न्यायालय का नहीं। ये काम सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर नहीं सकते, उनको ये गलती करनी भी नहीं चाहिए। सबकी अपनी सीमाएं हैं, सर्वोच्च न्यायालय की भी अपनी सीमा है, वो कानून नहीं बना सकता है।
कानून जो बना हुआ है उसके दायरे में अगर कुछ गड़बड़ है तो उसको जरूर, उस पर जरूर उसका ऑब्जर्वेशन आ सकता है, उस पर उसकी टिप्पणी आ सकती है, उस पर उसका फैसला आ सकता है। लेकिन कानून कौन बनाएगा? वो संसद बनाएगी। में जो लोग पार्लियामेंट इज सुप्रीम। उन्हीं की पार्टी को लोग नविका जी ऐसे बात नहीं कर सकते हैं, ये आदत इनकी बहुत खराब है। ऐसे नहीं बात जी, अनुराग भदौरिया जी, आपने बोल लिया, आपने एक्स्ट्रा टाइम में भी बोल लिया, अब आप थोड़ा सा सुन लीजिए, आपके लिए भी सही रहेगा और दर्शकों के लिए भी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, फेडर डाउन। सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर अपना एक फैसला सुनाया है, उसके आधार पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जानकारी देनी पड़ेगी, देनी ही चाहिए। जब निर्णय आ गया तो उससे सब बंधे हुए हैं। लेकिन यहां एक टिप्पणी मैं जरूर करूंगा, किसी भी फैसले में रेट्रोस्पेक्टिव कोई निर्णय लेना यह देश के लिए अच्छा नहीं है। जिन लोगों ने भी उस वक्त भारत के सरकार के स्टेटेड कानून के तहत जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे, उनको एनोनिमिटी का वादा किया गया था, क्योंकि इसकी चर्चा बार बार हो रही है। और अगर आप उससे एक तरह से कहें कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, जो उनसे कहा गया वो नहीं किया जा रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है, अगर सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है तो वो सामने आ जाएगा। और अब किसको नहीं पता है कि 6,000 करोड़ भाजपा को मिला है, 1,100 करोड़ कांग्रेस को मिला है, 1,000 करोड़ तृणमूल कांग्रेस को मिला है, एक एक राज्य की पार्टी को भी 1,000 करोड़ मिल गया। खैर, ये एक जरूरी विषय, ठीक है, इस पर आगे बात हो जाएगी। लेकिन जब हम सीए की बात करते हैं, जिन देशों का निर्माण ही जो इस्लामिक मुल्क है मूल रूप से, जहां हमारे दलित और पिछड़े भाई जिस तरह की, और वो अत्याचार कोई छिपा हुआ नहीं है। अभी हमने देखा था किस तरह से पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को सर पर उठाकर वो भारत की सरकार ने किस तरह से उन सिखों के भारत में आने का रास्ता साफ किया। हम दुनिया भर के लोगों को अपने यहां शरण तो देते ही देते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर काम करते हैं, लेकिन क्या भारतवंशियों को जो हमारे ही हिस्से कटकर हुए और आज वो हमारे ही लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, उनको नागरिकता देने का कानून नहीं बनाना चाहिए? जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस कानून की बात की, उस पे कांग्रेस की सरकारों ने नहीं किया, तो बीजेपी को भी नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए कि देश का मुसलमान नाराज हो जाएगा। कमाल है भाई, देश का मुसलमान तो इस देश के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो फिर वो मुसलमान पाकिस्तान के साथ कैसे जुड़ सकता है? मुसलमान अफगानिस्तान के साथ कैसे जुड़ सकता है? मुसलमान बांग्लादेश के साथ कैसे जुड़ सकता है? ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। इस पे हम कई बार बात कर चुके हैं कि इस देश की समस्याओं की जड़ में इस देश का एक वर्ग है जो बार बार पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या दुनिया के पता नहीं किस कोने से मुसलमानों से जुड़ जाता है। अरे भाई, हमारी ये जमीन है, इस देश का एक कानून है, और जो भी अल्पसंख्यक है हमारे पड़ोसी देशों में, उनके लिए ये कानून है। इस कानून का सबको स्वागत करना चाहिए, और जो भी कानून तोड़ने की कोशिश करे उसको कानून के दायरे में पूरी तरह से कड़ाई से निपटा जाना चाहिए, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए। तौसीफ खान, my question is very simple. Mamata Banerjee had in 2005 raised her voice and resigned her Lok Sabha membership on the issue of illegal immigrants in West Bengal. Today, she is saying not one Bangladeshi will be thrown out of India. That apart. The fact is, her views today on CAA are diametrically opposite to what they were in 2005. Why? Is it because now she wants to appease the population that gives her 70% of their votes in Bengal? Is this only about the vote bank? All India, Congress gets 30% of the minority votes. In Bengal, Mamata Banerjee gets 70%. RJD gets 77% of the minority votes. In Bihar, DMK and Congress together get 74%. In Tamil Nadu, SP, BSP get 73% in Uttar Pradesh, in 78% in Jharkhand, Congress and JMM. Is it the opposition to CAA, is it only because this is your vote bank which you do not want, and therefore you want to spread a fake narrative कि chronology समझो? That is why I'm asking you this. Is it only about appeasement? Navika, there's a very common phrase, if a law is unjust, a man is right to disobey it,
and man is obligated to disobey it. And therefore, this trio combination of CAA, NRC and NPR. But there is is a very no NRC, there is no NPR, it's only CAA. So proposes- why are you fear-mongering by It is the bringing in chronology. NRC and It is the NPR? chronology. Why are you bringing those in? No, there's no fear-mongering. A law, if government proposes to give relief to people on humanitarian considerations, how can religion take over that humanitarian consideration? The moment you bring religion, the moment you become biased, the moment you disallow people from a certain religion the same benefit that you're allowing to others, there is no humanitarian considerations. It is only and about that minorities is in absolutely these illegal three countries. under the law. Why are you The people of misinterpreting India, it? What is the your people of motivation India have for right to misinterpreting equality. it? Anand It is Ranganathan, why are they deliberately misleading? Anand Is Ranganathan. already pending. Please, Tausif bhai, please. I did interrupt you. I've been waiting patiently for my turn. Please give me a couple of minutes. Now, Navika, it's very important. Number one, ये क्या कहना चाहते हैं तौसीफ भाई, my dear elder brother, कि 200 million persecuted Shias हैं around the world. Muslims, unfortunately or fortunately for them or whatever it may be, are fighting amongst themselves in Yemen, in Saudi Arabia, all places, in Pakistan. Ahmadiyas, they don't consider it Muslim. So 200 million Shias को हम इंडिया बुला लें? मतलब ये लॉजिक समझ में नहीं आया मुझे. और वैसे भी humanitarian consideration. प्लीज ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन में 40,000 50,000 रोहिंग्या मुस्लिम्स इंडिया में हैं. तौसीफ भाई, आपको पता नहीं होगा, कतार ने सिर्फ 20 लिए हैं, हमने 40,000 लिए हैं. वो ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन नहीं है. देयर आर मुस्लिम्स फ्रॉम अफगानिस्तान हु हैव कम फ्रॉम हियर. दिस इज अबाउट, एज कोहली जी सेड, redressing the imbalance and injustice of the partition. Now, number 2, very important. Navika, this is very important. अगर मान लीजिए मैं एक लॉयर हूं. No, please, तौसीफ भाई, please listen. अरे नाविका, प्लीज, ये मेरा टाइम निकल रहा है, मेरा टाइम बहुत कीमती है. आप में तौसीफ भाई, okay, what's your argument, Anand Ranganathan? What's your argument? मैंने इनकी तो आर्ग्यूमेंट को डिमोलिश कर दिया. अब बाकी बचा अनुराग जी. ये कहने लगे कि आज ये टाइमिंग करी गई है क्योंकि इलेक्टोरल बॉम्ब. में इसे नाविका आपसे पूछता हूं, मैं एक लॉयर हूं, मैं करप्ट हूं, मेरी प्रैक्टिसेस करप्ट है. आपने कहा कि मैं करप्ट हूं, क्या आप हाँ या ना में जवाब दीजिए. विल यू हायर मी, यस और नो? Why are you asking me the question? Ask Anurag. Will he hire me? अनुराग जी को नहीं, आपसे पूछ रहा हूं. विल यू हायर मी? नो ना. मुझे लॉयर की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया. ओके, मेरा कहने का मतलब है nobody would hire me. Any logical person would not hire me. So if a party like समाजवादी पार्टी is against anonymity of electoral bond, नाविका ऐसे नहीं हो सकता. बीच में इनको पता है क्या आने वाला है. इन पे वज्र गिरने वाला है, ये डर के कांप रहे हैं अभी. इन पे वज्र गिरने वाला है, गिरा रहा हूं मैं. अगर कोई पार्टी ये कहती है कि एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड गलत है, तो मुझे बता दीजिए समाजवादी पार्टी उससे डोनेशन क्यों ले रही थी? क्यों ले रही थी? करप्ट में क्यों अपना हाथ क्यों डाल रही थी? उस गंगा में सब नहा रहे थे. कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एवरीबॉडी. देयर प्रॉब्लम इज कि सारी दुनिया को पता चल गया कि इनको बहुत थोड़ा मिला है और बाकियों को बहुत ज्यादा मिला है इनसे. दैट इज देयर ओनली प्रॉब्लम. अनुराग भदौरिया, क्या यही प्रॉब्लम है? पर एमसी अब्बास, come back to the CAA. Nobody's citizenship is being taken away. Only persecuted people from minority communities in these 3 countries who have been living in India since 31st of December 2014, who have already come into India, they are now being given recognition and citizenship. What is the problem? What is the problem? इतनी भी दया नहीं है आपके दिल में? दया बहुत है. आप आनंद भाई से पूछ सकते हैं. I was debating him on the other channel. Navika ji, I've always believed with great power comes great responsibility and equal accountability. To me, as a young Indian Muslim, I think to be responsible is to make the further statement, after which I might need a lawyer. The fact is, Navika ji, let me tell you on your show, on your channel, my bone of contention with CAA. But before that, let me tell you, the CAA which has come through has absolutely nothing to do with snatching away the Indian Muslim citizenship. I, as a responsible young Indian Muslim, say that on your channel. It is only about giving citizenship to the neighboring countries like Pakistan, Afghanistan, and Bangladesh, and those persecuted minorities. Now, let me bring to the forefront where I have a reservation towards this. Nalin Kohli Sahab
is a very able lawyer and a top-notch spokesperson. Respected sir, you've read the Constitution. Our Constitution is on the secularism principles, sir. Article 14 of the Constitution, sir. How is it that, my question to you, and Anand Bhai has also favorably asked this question in different ways, how is it, sir, that religion becomes a participant of giving somebody a citizenship? Also, as a matter of fact, हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब आपको गौर से सुन रहा था, आपने कहा यहाँ का ऐसा वर्ग है जिसको अफगानिस्तान पाकिस्तान से जुड़ने में अच्छा लगता है। अरे सुनिए भाई साहब, मैं उसी वर्ग से आता हूं और कान खोलकर सुनिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद था और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान एक नापाक देश है, एक देश गर्द देश है, and we Indian Muslims have nothing to do with it. कभी अल्लामा इकबाल को पढ़िए जनाब, सारे जहां से अच्छा 30 seconds closing comments, Nalin Kohli. मैं आपने एक अच्छा प्रश्न पूछा and it's a good question that deserves an answer for your viewers also, Navika. How are you? Is it a violation of Article 14? Article 14 is that no Indian citizen would be treated unequally or laws would apply equally to all citizens. However, within Article 14 is also embedded the concept of intelligible differentia. That means you can create a subclass as long as there's a reasonable basis to do so. Here the basis is partition. And minorities in those Muslim majority countries who have been persecuted and who could have in 47 come to India, but were given an assurance that they would be taken care of in 47 by Pakistan then, or the other countries, part of the historical India, it is to correct that wrong of partition today. So there is no violation of 14. It's an intelligible difference. You have answered it correctly. Yes, sir, I give in to you. But the fact is, sir, are you aware that in Pakistan, the Shias, Ahmadiyyas, Hazras are not even considered Muslims? They're considered to be kafirs, heretics, atheists, apostates. Yes, that's an argument I've heard, and I must answer Why that. not the CAA citizenship to them? When I they are can not answer even that very considered as simply. Muslims? I can answer that simply. Yes, no, please. I can answer that simply. Basically, irrespective of whether it is a Shia Muslim or a Sunni Muslim or any other sect, if so be it, I'm not an expert of Islam. However, they all pray to the same Allah and they all rely on the same Quran Sharif. So they are basically following the same religion. Second, anybody in the world, anybody can seek citizenship of any country. I mean, it doesn't matter whether you are a Hindu, Muslim, Buddhist, Parsi, Jew. Whether it's from India, Pakistan, Bangladesh or anywhere else in the world, people go to the United States, go to Europe. From North Africa they have gone. Some choose India. There are non-Indians from Europe who have come and taken citizenship here. So that is a separate route. CAA is only on the partition story and the unfulfilled agenda then. So why are we confusing the two issues? Well, I'm extending this debate. अनुराग भदौरिया जी, सवाल ये है कि दिक्कत क्या है? आपकी दिक्कत क्या है? दिक्कत बेरोजगारी दिक्कत है, महंगाई दिक्कत है, टाइमिंग दिक्कत है, जजेस का ज्वाइनिंग पॉलिटिकल पार्टीज दिक्कत है। आपकी दिक्कत क्या है? अभी तक जनता समझ नहीं पाई है। जनता समझ रही है कि दिक्कत यह है कि आज इतने सालों बाद जब चुनाव के 2 दिन बाद डेट डिक्लेयर होनी है, आपको सीए याद आया? इसके पहले क्यों नहीं आपको याद आया? इलेक्शन कमीशन से इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई कि 2 दिन में चुनाव डिक्लेयर हो रहे हैं। अरे ये तो ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट का उल्लंघन हो गया भाई। क्या कह रहे हैं आप अनुराग भदौरिया जी? अनुराग भदौरिया जी, आपको कैसे पता कि 2 दिन बाद चुनाव डिक्लेयर हो रहे हैं? आपको कैसे पता? हम पत्रकारों को नहीं पता, आपको पता चल गया। आपका कोई मोल है क्या इलेक्शन कमीशन में? हो गया ना, बोलने दीजिए भाई। अरे भाई क्या भाई, अरे हो गया, आप हल्ला मचा लिया आपने, हो गया। नहीं हल्ला मैंने नहीं, आपने बात ही ऐसी की। मुझे लगता है संविधान खतरे में है। नलिन कोहली हाथ उठा रहे। नलिन कोहली जी, डू यू थिंक द कॉन्स्टिट्यूशन इज इन डेंजर नाउ दैट द ऑपोजिशन नोज व्हेन द डेट्स ऑफ इलेक्शन विल बी अनाउंस्ड? ये तो गलत बात है।
गलत बात है, आप मुझे बोलने 10 साल से सुन रहे कहने का मतलब होता है 2 दिन 10 साल से सुन रहे हैं कि संविधान खतरे में है। खतरे किसके लिए है? के अंदर में डिक्लेयर तो ऐसा थोड़ी ना, अगर अनुराग जी की पार्टी हार जाएगी तो संविधान खतरे में है। तब आपको याद आ रही है जीतने के लिए आपको जनता के बीच जाना पड़ेगा। अनुराग जी बात कर रहे हैं, इसके मतलब अरे आप हर बार जो है ऐसे हर चीज कहते हैं। ठीक है अनुराग जी, और हम डिबेट पे 10 साल से, मैं अनुराग जी को एक जरूर बधाई दूंगा, दिल से, तहे दिल से मैं बधाई दे रहा हूं अनुराग जी को कि 10 साल में जितने डिबेट, कई 100 डिबेट हो गए होंगे, उनकी स्क्रिप्ट लगातार एक है, मतलब अपने शब्दों पे कायम है। जो 10 साल पहले डिबेट में कहते थे वही 8 साल पहले, वही 6 साल पहले, वही 4 साल पहले, वो आज भी वही बात वो करते आ रहे, पर जनता इनकी बात नहीं समझ पा रही। मतलब इस पर भी हम कंसिस्टेंसी देख रहे हैं, जनता भी इनकी बात समझ नहीं पा रही, पर जनता की वही बात वो मानते हैं कि 10 साल से लगातार कर रहे हैं। सब भ्रष्टाचारी आपके दल में आ गए, परिवारवादियों के साथ आप सरकार परिवारवाद को रोकना है। अनुराग जी, कम से कम आपको तो ये नहीं कहना चाहिए भाई साहब, आप परिवारवाद को रोकेंगे तो आपके पारिवारिक आधारित पार्टी का क्या होगा? मतलब मुझे ये बता दीजिए ना कि अगर आप कहते हैं कि परिवारवाद को रोकना है तो एक परिवार आधारित पार्टी जिसके आप प्रवक्ता हैं उसका क्या होगा? आनंद रंगनाथन ऑल्सो वांटिंग टू कम इन। आनंद रंगनाथन, हर्षवर्धन जी आपके पास आ रही हो। आनंद रंगनाथन। नाविका देखिए, सबसे पहले तो ये बात है, ये जो कितनी परिवारवादी पार्टी आपको चाहिए? अनुराग भदौरिया जी, 2 दिन के बाद चुनाव के डेट डिसाइड हो रहे हैं और अनाउंस हो रहे हैं, ये आप कैसे जानते हैं? अभी तो आप कह रहे थे कि इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन कर रहे हैं, के बाद हो जाएंगे। 2 दिन तो कहने का मतलब होता है, लेकिन आपने अच्छा कहने का मतलब अलग होता है, समझने का अलग होता है। आनंद रंगनाथन, ओके ऑल राइट, आनंद रंगनाथन, आनंद रंगनाथन नहीं समझते। नाविका, अनएम्प्लॉयमेंट अभी सबसे कम 3.1% पे, पीरियोडिक लेबर सर्वे ने किया है। इन्फ्लेशन अभी सबसे कम 5% पे है। जीनी कोफिशिएंट में 6% का रिडक्शन आया अर्बन रूरल में। इनके पास खुद के मुद्दे नहीं है, तभी तो ये झूठ फैला रहे हैं। CAA is only giving citizenship, not taking away citizenship। नाविका ऐसे देखिए बात नहीं हो सकती। देखिए ऐसे, अनुराग जी प्लीज, आप देखिए बीच में मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। मैं डेटा पे जाता हूं, आप डाटा पे जाते हैं। आपका अन्नदाता कोई है वहां पे परिवारवाद वाला, मैं डेटा पे जाता हूं। आपको डेटा पे बिलीव नहीं करना वो अलग बात है, आप अपना बिलीव करिए जो आपको जो बिलीव करना है। नाविका, आई बी गोइंग टू गो लाइक दिस, मैं क्या करूं? पता चलेगा कितना। He is the national spokesperson of a recognized political party, the only political party in the India alliance which has not boycotted me. इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे लिए इन्होंने, ये करप्ट नहीं है। इनसे पूछना चाहता हूं मैं, आपकी पार्टी करप्ट नहीं है? इलेक्टोरल बॉन्ड से क्यों पैसे लिए आपने? कितने लिए, किसने किसको दिए? आप यहाँ पे बैठ के खाली बीजेपी की डफली बजाने आ गए, तो मालूम है आपको कुछ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बाजार जाते हो कभी? क्या भाव है दाल, जरा बताएंगे आप? अरहर की दाल क्या भाव है? आपने क्यों लिए? कभी आप जाते नहीं हो ना? क्यों किया ये? तेल क्या भाव है पता है आपको? सरसों का तेल कैसा होता है मालूम है? संजय झा, कैसा होता है? संजय झा, लाल पीला हरा कैसा होता है? ऑल राइट, संजय झा कमिंग इन। संजय झा आपके अलायंस पार्टनर है, उन्हें भी बोलने दीजिए। कमाल है अनुराग भदौरिया जी। संजय झा। नाविका जी, कुछ देर पहले एक प्रश्न उठाया गया कि क्या भारत का संविधान खतरे में है या नहीं। अरे भाजपा के तो बहुत बड़े एक नेता है आनंद हेगड़े, उन्होंने तो खुलेआम कह दिया कि हमें चाहिए पूर्ण बहुमत से 2/3 मेजॉरिटी, हम तो संविधान बदल देंगे। ये तो भाजपा आज खुलेआम कह रही है। और जरा मैं अपने मित्रों को बताना चाहूंगा, आनंद रंगनाथन जी और नलिन जी को, ये जो जज जिन्होंने हाई कोर्ट रिजाइन करके भाजपा को ज्वाइन किया, उनको पूछा गया कि गांधी और गोडसे में आप किसको चाहते हैं, उनका जवाब था ये तो हमको सोचना पड़ेगा। अरे भैया, जिस देश में ऐसे व्यक्ति को आप बीच में बीजेपी में ले रहे हैं जिन्होंने हाईकोर्ट के ऐसे जजमेंट्स दिए, जो गोडसे के, शायद गोडसे को भगवान समझते हैं, जिन्होंने गांधी जी की हत्या की, तो देश का भविष्य उज्जवल नहीं अंधकार में डूब रहा है। और इसीलिए ये सब जो पूरा PR और पब्लिसिटी किया जा रहा है, इस पर हम सब लोगों को चिंतित होनी चाहिए। वी शुड नॉट बी वरीड बिकॉज एट द मोमेंट यू हैव अ फोटो, नाविका, where a constable has killed, has literally attacked or kicked people who are doing a namaz. He's kicked people who are doing a namaz. Is this the way you treat your minority citizens in the country? All right. All right. Nalin Kohli, please respond. Come in. I must come in. All 3 comments. First, it's absolutely incorrect and unacceptable that anybody kicks another person while praying. It could be a namaz, it could be a puja, it could be before the church. How dare you try to make that an argument that the BJP is supporting that? We don't.
You have created this environment, Nalin. Everybody knows that. Let me come back to Anand Hegde. On Anand Hegde ji's statement, I think my party clarified immediately. That's a personal statement. I love the argument that the Congress party takes. When it suits them, when every controversial thing comes, they say it's a personal statement. That's a personal statement. This is not the party's line. They take it for their leaders, then it's conveniently okay. When we are saying it's his personal view, not the party line, then it's not okay. So I think we need to draw that line. The BJP's agenda is clear, transparent, and it runs on what Prime Minister Modi's government is doing consistently for 10 years. There is no discrimination for any Indian, irrespective of region or religion. Caste, creed, anything, gender. For those who are raising questions of citizenship given on the basis of religion, let me give you the numbers. Between 2014 and 2020, in the last 6 years, 2,838 Pakistan refugees, 914 Afghanistani, 172 Bangladeshi refugees were given Indian citizenship, which include Muslims as well. From 1964 to 2008, over 4 lakh Sri Lankan Tamils were also given citizenship. The only difference is that Ahmadiyas, who are being called the persecuted Muslims in Pakistan, they can't come under the CAA. They can come under the Citizenship Act, which is also available. In the CAA for minorities. It is a 6-year wait, and in the other there are different rules, but they can also come in and they have the same access to the Constitution of India. My question is a civilizational question. If Nehru said it was okay in 1947 and 1949, if Dr. Manmohan Singh said it is okay in 2003, if Ashok Gehlot, senior leader, wrote to the government at that time saying that quickly notify CAA, all that was fine. But if the Modi Sarkar, if Modi and Home Minister Amit Shah notify it, then all hell breaks loose. The question is it about the issue or is it about Modi and targeting Modi? That's the question the opposition will need to answer. We leave it at that. Thank you very much to all my panelists for joining me on the big CAA debate. Good night, ladies and gentlemen. Thank you for watching the News Hour. I'll see you tomorrow on the same show.